Hey, what's up, everyone? Praful here, and welcome to the very first episode of 915 Daily. This is going to be a regular daily market analysis video series where we are going to be analyzing the markets on two fronts. One, your regular price action trading front, and the other, my favorite, the volatility trading front. So, let's get started and do subscribe to this channel so that you don't miss any future videos. Today is 17th of September and finally the bulls can take a sigh of relief because जो 25,000 level जो था काफी महीनों से मतलब रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा था, नाउ इट हैज बीन डिसाइसिवली टेकन आउट एंड वो जो 25,100 एंड 200 का जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस थे दैट आल्सो हैज बीन क्लियरली टेकन आउट एंड वी आर फर्मली ट्रेडिंग अराउंड 25,300 लेवल्स. अगर इंट्राडे की बात करते हैं, दो वी डिडंट सी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंडिंग डे टुडे, बट जो गैप से मार्केट्स ओपन हुए थे इट वाज कंप्लीटली हेल्ड एंड द बुलिशनेस इज स्टिल मेंटेन्ड. एंड आज शाम को यूएस में एफओएमसी की मीटिंग है एंड अनाउंसमेंट है एंड द एफओएमसी इज काइंड ऑफ split between whether to cut the rates or not, and that is kind of making the market slightly jittery. And वो जो anxiety है वो walls में आज नजर आ रहे थे towards the close, right? So let's get to the terminal and let's do an in-depth analysis on this. So all right guys, so we have this beautiful looking 915 terminal. First things first, let's analyze the spot chart. जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या बोल रहा है वो देखेंगे. So we can clearly see that markets were consolidating between 24,400 levels and 25,200 levels for quite some time now. And कितनी बार markets ने इधर फ्लोर पे बाउंस किया and also 3-4 बार इस सीलिंग से मार्केट को सप्लाई मिला. Now that has been clearly taken out. That too with a clean trending Marubozu kind of a candle, especially on a nifty expiry, which has been followed through by another good candle. Of course, size में ये candle काफी कम छोटा है, but still the bearishness has been completely negated and जो bullishness था उसको preserve किया गया है. Now इसको कैसे trade करना है, that's a completely different story because कौन सा स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ट्रेड करना है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि क्या ट्रेड करना पड़ेगा. बट the bias has been established and the markets are clearly bullish. Apart from the fact that we have one event today, FOMC का event, उसके बेसिस पे अगर global markets कैसे behave करेगा उसके ऊपर अगर हमको कुछ effect पड़ेगा, then probably we might be seeing some sort of a negation of this bullishness. But वरना pure price action, pure technical के बेसिस पे we are in a bullish territory. तो अगर lower time frame पे जाके देखेंगे तो of course after the very good yesterday's trending move, आज market again gap up हो गया and अगर lower time frame में जाके देखेंगे तो of course after a very good clear trending move yesterday we again gapped up, not a major gap up but a decent gap up. and उसके बाद though the markets went completely sideways, ये जो बुलिशनेस था उसको हमने हमने प्रिजर्व किया है. वो बेरिशनेस में कन्वर्ट नहीं हुआ है बिकॉज ये जो गैप था वो सस्टेन हुआ एंड थ्रू आउट द डे द मार्केट्स ट्रेडेड अबव द यस्टरडेज क्लोज. सो दिस शोज दैट अगर एफओएमसी का जो आउटकम है फेवरेबल रहा तो वी माइट बी सीइंग अनदर सॉर्ट ऑफ अ गैप अप एज वेल. एंड इफ यू लुक एट द वॉल्स, अगर वॉल्स की बात करें, so tomorrow first let's talk about the Sensex walls because tomorrow we have Sensex expiry and उसके बाद निफ्टी की बात करते हैं. तो today was Sensex का 1DT, we opened it somewhere around 430 levels, which was not that great because 0.5% premium offer कर रहा था market. We saw a steady decay throughout the day, but towards the end, of course, लोग jittery है because कल market कहीं पे भी खुल सकता है and towards the end of the day we saw a steep rise in the straddle prices. The walls rose drastically from almost 340 levels to 400 levels. मैंने भी यहाँ पे positions hold करके बैठा था because I was expecting the markets to close somewhere around 350. अगर DK नहीं होता तो कम से कम उसी लेवल पे क्लोज होना चाहिए था. But then I had to give up majority of my gains only to like close the day at minuscule gains. Green में close हुआ but I had to give up a lot of my gains because of this spike in volatility. अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला. So there was not much decay throughout the day, but towards the end of the day, we saw a good amount of spike in the straddle premiums. So let's analyze the open interest. तो अगर कल की ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो there has been a lot of straddles built around 82,600, 82,700 and 82,800 levels.
and almost a lot of calls also have been written somewhere around 83,000 levels. So market is of the opinion that 83,000 levels should not be taken out for tomorrow. But this is not that important because these are all short-term contracts and ये जो open interest एक चुटकी में change भी हो सकता है. But if you look at the Nifty's open interest for next week, you can see that though the markets have clearly taken out 25,000 levels, people are not expecting some sort of a runway kind of a rally. So 25,300 पे straddles build हुए हैं, 25,400 पे straddles build हुए हैं, and even 25,200 पे भी straddles build हुए हैं. थोड़ा बहुत यहाँ पे 25,200 से आज थोड़े calls unwinding हुए हैं, but those calls have been simply rolled over to 25,300. अब देखोगे तो 25,300 पे भी आज call addition हुई है, and 25,300 पे of course काफी ज्यादा put addition हुई है, because 25,300 पे अगर कोई भी straddle trade करता है तो उसको कितना प्रीमियम मिलता है पूरा वीक के लिए? अराउंड 230 पॉइंट्स मिलता है. एंड ऑफ कोर्स if I go back to the spot chart and I show you Nifty की, तो definitely like we can see that 25,150 levels जो है वो काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन है, एंड उसके नीचे ऑफ कोर्स 25,000 का राउंड नंबर रेजिस्ट सपोर्ट है, वो भी सपोर्ट जैसे एक्ट करेगा. तो इफ somebody builds a straddle at 25,300, he can confidently hold on to that straddle till at least 25,050 or 25,000 levels are clearly taken out. तो जैसे 25,000 breach होगा उसके बाद he might be repositioning himself, but this gives a very good technical range to actually hold on to that straddle. And ऊपर 25,500 levels, 25,560 levels तक भी वो आराम से उस straddle को hold कर सकता है. That is why the option writers are quite confident, though market थोड़ा bullishness दिखा रहा है. They are of the opinion that yes, we are sideways to bullish, but not completely aggressively bullish. So that is why आप देखोगे कि open interest में you are seeing a lot of calls also are being added around 25,300 and 25,400 levels. All right, so tomorrow is Sensex expiry, and Sensex expiry को हमको कैसे trade करना है? तो my bet would be something like this, because today we have an event, and event से क्या हो सकता है कि तीन चीजें हो सकती है कि so let's plan for all the three events, right? First thing, if at all we open a big gap up, अगर बड़ा एक gap up में खुल जाता है, then any dip towards the today's high would be used to sell the puts, and I'll not be like too concerned about taking extremely bearish positions. I'll wait for a dip to initiate bullish positions. And if at all we open mild gap down, तो then इसका मतलब ये है कि जो इवेंट है वो काइंड ऑफ नॉन इवेंट रहा, एंड मार्केट उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. सो देन आई विल बी प्लेइंग दिस रेंज. ये जो 80 to 400 से लेके 80 to 800 के बीच जो रेंज है वो प्ले करूंगा, एंड एज एंड व्हेन आई गेट अ फर्दर कंफर्मेशन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, आई विल बी ईदर कन्वर्टिंग इट टू अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, और आई विल बी ट्रेडिंग अ नॉर्मल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रक्चर. ऑलराइट, एंड अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, if at all we open a huge gap down, अगर यहाँ पे कहीं पे if at all we open somewhere around here या उसके नीचे अगर खुल जाता है, then I'd be waiting for the first half an hour. पहले एक initial balance wait करने को complete होने को wait करूंगा, and उसके बाद I'll start to initiate the positions depending upon the first hours of activity. But if at all, as I said, if at all there is a huge gap up, I'll not directly become bullish. Neither I'll be shorting the calls, but I'll be trying to sell the puts at every dip and at every breakout. So I'll be waiting for some sort of a W pattern. यहाँ पे जैसे मेरे को neckline breach होने का मौका मिलेगा, वहां पे मैं puts short करूंगा. And of course, after post 1 o'clock in the expiry, so of course I'll try to make the option 0 by gamma scalping. तो वो तो है ही, but that would be my plan for tomorrow's expiry. Alright, so कल market के बाद मिलते हैं, and we'll see what the market has in store for us. And I'll see you guys tomorrow. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.